Today's heading is frequency division multiplexing. हमने वेस्टिजियल साइड बैंड को देखिए, बस एक लाइन आप मान लिख सकते हैं। वेस्टिजियल साइड बैंड की बैंडविड्थ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। FM उसकी बैंडविड्थ रखिए। अच्छा, मेरे क्वेश्चन मार्क ये दूसरी बात के अंदर, ठीक है। I leave this part to you. Bandwidth, power और efficiency ये तीन वर्ड्स लिख लेना, कुछ ए एंड में, ठीक है। VSBSC के लिए eyes on board। VSBSC के लिए बैंडविड्थ, पावर और एफिशिएंसी आप तो लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अच्छा, व्यूअर्स राज उम्मीद कैसा है? सेकंड नेम को रेज योर हैंड। 1 2 आप लिख गया? व्यूअर्स राज उम्मीद कैसा है? सेकंड नेम को सुना तो गाइड करो, तो बेस्ट मत करो। गाड़ी तो सजा है, फिर किसने आ गए? I wanted all of you, आप लिख लो जो कल सोए थे आप जाके। I wanted all of you to actually search a standard diagram for VSBSC, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा, जो भी कोई सब्जेक्ट आप क्लास में पढ़े, आप बस एक बार उसकी बुक को देखें ऐसे पेज मोड़ के। किस लिए? So that when you see a standard diagram, कभी यहाँ पे मैंने लिखा होता है C, आपको दिखता है R। It happens when you see a standard diagram from a standard book, it gets complete हो जाता है, ठीक है जी। This is the concept, okay? So I always recommend you to go through a book for every topic. Make this a habit. चल, एकदम से आदत बनाओ। When you see the lecture, उसके लिए कोई एक बुक रखो, soft copy, hard copy. Just scroll through. I don't say read. You can always scroll in the bus, and we scroll too much, right? How many of us scroll too much? Raise your hands. How many of us scroll our cell phones too much? Raise your hands. कौन scroll करता है बहुत ज़्यादा, उसको लगता है अपने हिसाब से? Raise your hands. Raise your hands. Come on. Sincerity is the key. I think a good number of people does. क्या उसकी इंसान का सान वो ऐसी कुछ नहीं काम है, स्क्रॉल कर रहे हैं, है कि नहीं? सो मेक दिस अ हैबिट। आप एक दो सब्जेक्ट, ये पूरी सब्जेक्ट है, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उसकी कोई बुक आप रखें, समझे मेरी बात? उसको एटलीस्ट स्क्रॉल करें, पढ़े नहीं, स्क्रॉल करें बस। Dedicate your time, नहीं जी इस टाइम पे मुझे ये काम करना है करना। That's how. There is no perfect schedule, by the way. I have come to this conclusion that there is no perfect scheduling, but yes, you can plus minus सब टाइम में कर सकते हैं, and ये आदतों को रखें। That's why मैंने आपसे कहा था एक स्टैंडर्ड डायग्राम देखिएगा किसकी? रशिया खुशियत तुम चाह चाहिए मेरी सिद्धि जगह की बड़ी जगह। अच्छा, next point. FDM. Today's heading is FDM, which is frequency division multiplexing. क्या बता रहा हूँ आप? आजा बाहर आ, इधर आजा। गलत रोड पर। FDM is used for frequency division multiplexing. MULTIPLEXING. Frequency division multiplexing is used for multiplexing continuous signals. Is used for multiplexing. FDM is used for multiplexing continuous signals through a common channel.
through a common channel. Let's imagine I have M1 to be transmitted to a channel and let's say I have M2. अरे ये लिखना नहीं है, ये बस देखो आप ऐसी बातें कर रहे हो. Imagine ना, अभी तक मैंने आपको एक वर्डिंग दी है कि imagination दी. Now let's see what actually happens. What do I mean is that मेरे पास M1, M2 और M3 है, तीन मैसेज सिग्नल्स हैं, इनको एक कॉमन चैनल से भेजना है. ठीक है जी, ठीक है. कैसे भेजें? अगर पहली बात है, अगर मैं कॉमन चैनल पे भेजूं एट अ टाइम तीनों को, क्या हो जाएगी? इंटरफेरेंस. So I need to find a method. So the method is I use modulator 1 having frequency say FC1, carrier frequency. Then I use modulator. This is modulator, okay? This is modulator. Eyes on board. Mod 1 is a modulator 1 with frequency FC1. Mod 2 is modulator 2 with frequency FC2. And then I have mod 3, which is the modulator with frequency FC3. Any idea why I am using a low pass filter? Message signal is already a low frequency signal. I am using a low pass filter. कहाँ समझ आएगा मतलब? चलो फिर भी याद रखो, I am using a low pass filter to avoid aliasing. Yeah, I am using a low pass filter to limit my message signal within proper values. Okay? आपके लिए वो काफी रहेगा. So this happens to be the transmitter side, and this will go on a channel. Your receiver side. This is the channel. Eyes on board. This is channel, and this is your receiver side. But this is the transmitter side. Sorry, transmitter, channel, receiver, and that's how it is. Transmitter, channel, and the receiver. Point number 2. FDM is used in both wired and wireless transmission. FDM is used in both wired and wireless transmission. अगर कोई मैं बनाऊंगी ना ये लाइन डॉटेड लाइन बनाने जरूरत
के लेकिन इसे एम मौजूद ताकि डायग्राम बने साफ सुथरा you should try to use symmetry in your diagram बन गया तो एक पॉइंट आप ये समझे जो लो पास फिल्टर यहाँ पे था वो बैंड लिमिटिंग करता है ठीक है ना बैंड लिमिटिंग जब हो गई बैंड लिमिटिंग मतलब है कि सपोज मेरा अगर कोई सिग्नल है which is something like this I ensure कि I retain only the significant frequency and additional frequency जिसका कोई significance नहीं है उनको मैं ऐसे ही रहने दूँ What is the significant frequency? What do you mean by significant frequencies? One last. What do we mean by significant frequencies of a signal? One second. What do you mean by significant frequencies? Which? No. Janaman. What do you mean by significant frequencies? इसका मतलब you are forgetting what we read in the previous lectures and you are putting it on stack. What do you mean by significant frequencies? Just say. Not the exact answer. Can you tell me the answer? Huh? Exactly the right answer. Which carries 80 to 90% of the signal strength. Yeah, no, we think here. Anyways, let's go ahead. Imagine my M of t, M1 of t has a spectrum like this with bandwidth of, eyes on board please, eyes on board, we're trying to understand the significance of FDM. That is very important. And let's say my M2 of t again occupies the same bandwidth minus 5 to 5k and my M3 is of a different nature which again occupies the same bandwidth minus 5k to 5k. Eyes on board please. If I transmit all these three in a common channel without modulation, the channel spectrum or the nature, the way they will occupy the channel will be something like this. आप समझ रहे मेरी बात? तो अशना का नाम रेडियो स्टेशन ची एक सी प्रतिमान दुसरे रेडियो स्टेशन जाको मतलब acceptation of the sun. That is maybe that you have a particular band which is coming on the same particular band पे वो सारे stations आ रहे हैं. Anyways, अगर मैं without FDM transfer करता हूँ अपने signals को, तो channel spectrum or I would say the signals will occupy the channel something like this, and the result is nothing but interference. In order to avoid this, what I do, imagine ये जो मेरी channel थी, इसकी overall bandwidth है 100 megahertz, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सारी channel क्या रहती है बैक एंड, सारे signals एक ही जगह आ रहे हैं. Now by using FDM, what we do, हम 3 carriers use करते हैं with 3 modulators. Where FC3 is greater than FC2
and it's greater than FC1. Therefore, इन तीन कैरियर्स की वजह से मेरा एक सिग्नल यहाँ पे आएगा, दूसरा सिग्नल यहाँ पे आएगा एंड तीसरा सिग्नल although they will still have bandwidth equal to, कितनी bandwidth थी उसकी? -5 to 5 था ना, टोटल ना उसका एक्सपेंस में कह रहा हूँ, तो बैंडविड्थ कैन बी हाईएस्ट फॉल्स टू लोएस्ट फॉल्स टू, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका टोटल एक्सपेंस जो है वो था 10K का, ऐसा ही or else I can write it as I have a code. This is FC1, this is minus 5K plus FC1. This is 5K plus FC1. This one will be FC2. और this point will be FC2 minus 5K. अब कंफ्यूज हो जाओगे इससे. And this point over here will be FC2 plus 5K. This is FC3. Write the 2 points on your own. FC3 minus 5K, FC3 plus 5K. अगर आप नोटिस करेंगे इनके दरमियान एक आइज ऑन बोर्ड, अगर आप नोटिस करेंगे, if you notice all, I made these signals, but in between two signals I have a small little gap. This gap is called as guard band. Guard band. ये गार्ड की तरह काम करता है. जुलूसान चोकन विशुद्ध दिमाग ओवरलैपिंग का ना. तो गार्ड बैंड जब आप रखते हैं सिग्नल्स में, आप ऐसे FDM करते हैं that there is a certain guard band also. therefore हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे. we will say FC3 is greater than FC2 plus guard band bandwidth. इसकी भी कोई बैंडविड्थ होगी ना. Eyes on board is guard band की भी कोई बैंडविड्थ होगी. Now likewise your FC2 is greater than FC1 plus guard band. सही है कि नहीं? ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ना FC1 ये इससे ग्रेटर है, लेकिन गार्ड बैंड का भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए. ये एक प्रोडक्ट बात है. So we can consider the previous one as case 1 when there is no FDM. This is case 2, FDM with guard band. Now can you make case 3 of the same diagram? हाँ? White comment. ये हमने assume किया. Got it. हमने तीन फ्रीक्वेंसी ये रखना पड़ेगा. अगर हम ये तीनों कैरियर सेम रखेंगे, FDM कर रहे हैं, हाँ इट कैन बी ए गुड क्वेश्चन. हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया लेकिन कैरियर सेम रखा, तो तब भी वो तीनों ओवरलैप हो जाएंगे. बिकॉज वो FC1 पे आएंगे, ये प्लस माइनस आ जाएगा, FC1 पे दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा. आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ और कोई बात नहीं. केस 3 बने थे पाने यह डायग्राम से बना विदाउट गार्ड बैंड, मतलब ये और ये पॉइंट एक साथ केस 3 आपका है FDM.
बेसिकली आपका है FDM with no guard. फिर आप ये सोचते लोगे शायद बहुत light and numerical piece. Three message signals. अभी लिख रहे हैं आपके? Are you done? We have a numerical now at hand. Three message signals. Three message signals. Three message signals, each band limited to 5 kilohertz. Three message signals, each band limited to 5 kilohertz are multiplexed. थोड़ा तेज लिखो. Are multiplexed using FDM. Are multiplexed using FDM. Full stop. या comma with guard band equal to 1 kilohertz. With guard band equal to 1 kilohertz. Find multiplexed signal bandwidth. Find multiplexed signal bandwidth if the modulation schemes used are AM, DSB-SC and SSB-SC respectively for the three message signals. If the modulation schemes used are AM, DSB-SC and SSB-SC respectively. इसका मतलब हमने जो तीन मॉड्यूलेटर्स पर आइज ऑन बोर्ड प्लीज. ओ जाना, why are you so much behind? You should sit somewhere on these two. Okay? Because I want both of you, I told you last time, both of you should sit very near to me so that I get kind of recapitulated that I have to use a different medium of language. Because I often get carried away. Where majority of students speak from the other section of the world and two students from another section of the world. It's difficult. So you should sit here, these two lecturers. Try it out, please. चलिए ये क्वेश्चन था आपका. आपके पास तीन मैसेज सिग्नल्स हैं. वेट, आपके पास तीन मैसेज सिग्नल्स थे. Each was band limited to 5 kilohertz. मतलब हर एक की फ्रीक्वेंसी FM है 5 kilohertz. So that's what I have written, 5 kilohertz. Point number 2. हमने FDM यूज किया है, तो ये आपका बन गया स्पेक्ट्रम डिफरेंट के लिए. तीसरा पॉइंट, हमने तीन मॉड्यूलेशन स्कीम्स यूज की है, AM, DSB-SC और SSB-SC. पहले हमें काम करना है इनकी बैंडविड्थ निकालनी है. मतलब अगर मैं इसको मॉड्यूलेट करूं, हालांकि ये इमेज, ये पिक्चर जो यहाँ पर अधूरी है, आई हैव टू विजुअलाइज दिस इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन कि मॉड्यूलेशन के बाद ये कितना स्पेक्ट्रम खाएगा. FM1 ये है. मेरी AM के लिए बैंडविड्थ जो होती है, bandwidth AM is how much?
आर्ग्यूड सर हम कैसे बैंडविड्थ निकालें, हमारे पास तो एफसी है ही नहीं. बट यू डोंट नीड एफसी फॉर कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ इन दिस मॉडलिंग स्कीम्स. Twice FM. 2 into 5 is what? It is 10 PA. When we go to DSB-SC, if you remember, the advantage in DSB-SC was we were able to reduce the power, but we were not able to reduce the bandwidth. So bandwidth still happens to be the same formula, which is twice FM. Yeah, both are correct, na? So this becomes 10 kilohertz again. 10. Now SSB-SC bandwidth we know is only FM. Formula chala yaar. Zuar, what is the bandwidth of SSB-SC signal? Now for SSB-SC bandwidth is calculated as FM only. So FM3 will be the bandwidth which is 5 kilohertz. So the final bandwidth will be the addition of these three. Yes, exactly. This is what I was trying to notice. I deliberately left this information for you people. So it will be 10 plus 1 plus 10 plus 1 plus 5 plus 1. No, we have to stop here. There is no other signal after this. So bandwidth overall is equal to 10 plus 10, 20, 25. Please a round of applause for those who said 27. Yeah, I have a question for you people. Eyes on board, please. If I change this AM modulation to SSB-SC and this DSB-SC to SSB-SC, can you give me the final answer, please? Likewise, we can try for AM, खाली DSB-SC, mixed वाला. तो इसीलिए याद रखना जब भी मैं आपको लास्ट में जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी नोटबुक बनाएंगे उसमें वो वाला न्यूमेरिकल रखना चाहिए जिससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए. ये न्यूमेरिकल करने से बाय डिफॉल्ट अगर आपको मिसाल एग्जाम में आता है AM ओनली, तो यू आर विजिलेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट इट डिपेंड्स ऑन द मॉडुलेशन स्कीम बैंडविड्थ क्या होगा. Anyways, next question. चलो छोटा सा क्वेश्चन लिखो. You can do it at home. If much time is not left. 10 message signals. Each band limited to 10 kilohertz. 10 message signals. Each band limited to 10 kilohertz. Are multiplexed using FDM. 10 message signals, each band limited to 10 kilohertz, are multiplexed using FDM, comma, guard band is equal to 0.5 kilohertz, comma, guard band is equal to 0.5 kilohertz. Full stop. Find signal bandwidth if modulation scheme used is part number A, AM, part number B, DSB-SC, part number C, SSB-SC. अब देखिए अगर मैं ये कहता मॉड्यूलेशन स्कीम यूज्ड आर, मैंने क्या यहाँ पे बोला मॉड्यूलेशन स्कीम यूज्ड इज, मतलब एक ही यूज होगी सारे 10 के लिए.
अगर मैं कहता मॉडलिंग स्कीम यूज आर तो मुझे 10 के नाम देने थे। समझ आया कुछ? जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, जिसको नहीं आया रेज योर हैंड। हाँ मैं में पाए yes और no does not determine कि आप बोर्ड पे आएंगे या नहीं आएंगे। My logic determines मैं yes वाले को उठाऊं या no वाले को उठाऊं। आपके लिए यही काफी है that you be sincere, okay? Now please come. आपने कहा ना मुझे आया, please come, come on. Teacher one please मतलब तो पिघला शाबाश।